ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ and welcome back to my channel. So today we are going to do makeup. बहुत ज़्यादा बेसिक मेकअप करांगे. बेसिक मेकअप in the sense कि जो हर कोई कर सकते इस टाइम for मेरे वर्गे होर जड़ियाँ कुड़ियाँ ने जिन्हों ने हजे शुरुआत ही करनी ने या फिर जो चाहदियाँ ने कि बई असी सिर्फ कवर करके भी फटाफट जो हो जाता उस तरह और घट प्रोडक्ट्स दे विच जो कि और ज़्यादा यूटिलाइज भी हो सकन जो प्रोडक्ट तो उन्ना के ही यूज़ करके असी किद्दां उन्हों मतलब किद्दां फिर भी मेकअप कर सकते. दैट्स वाई मैं अज दी वीडियो दे विच स्पैशली इस तरह दा मेकअप करांगी जो कि आपां रेगुलर कर सकते हैं. नॉर्मल डे टू डे अपनी लाइफ विच कर सकते हैं. जो अगर तुसी इमीडिएटली बाहर जाना क्विक जो हुंदा वो करांगे एंड जो घट प्रोडक्ट्स दे विच होगा. अनदर थिंग इज़ कि एक प्रोडक्ट नूं आपां किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों दे विच. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सिर्फ घट तो घट चूज़ करा प्रोडक्ट एंड आई हैव चोज ओनली 5 प्रोडक्ट्स, ओनली 5 एक्सक्लूडिंग स्पॉन्ज एंड ब्रशेस. ऑफ कोर्स दैन बहुत ज़्यादा हो जाते तो सिर्फ जो मेन 5 ने वो आई होप वट एवर आई एम गोइंग टू शो यू विल हेल्प यू एंड स्पैशली उन्होंने लोगों लिए जो कि इन्ना ज़्यादा नहीं भी करना चाहते है मेकअप थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं. So let's start. Okay, so the first thing, if you can see, I just washed my face and I applied moisturizer. So moisturizer क्योंकि ये उधर विच मेकअप च कंसिडर नहीं होगा. So just normally wash your face and apply moisturizer. If you can apply sunscreen or moisturizer जो भी तुसी कर सकते हो वो लगा लो. And today I just applied my day cream. Wash my face and I applied day cream. So that's how it is now without any product. Right. This one is this one. It's concealer. This is Born This Way concealer. That's what I use every day, every single day. And आजकल मेरी भी रूटीन इसी तरह दी है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली मास्क लगाना होता सो पॉइंटलेस आ. तो मैं की कर दी हाँ आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन आई अप्लाई दिस कंसीलर under my eyes, okay, on the top of my eyelids, on the side. I have this stupid dark spot, I don't know पर मैं इत्थे भी लगानी क्योंकि वो मैंने दिखदा वा. और थोड़ा थोड़ा इत्थे एंड थोड़ा इत्थे जो भी थोड़े डार्क स्पॉट्स ने यू नो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾ ਲਓ. Now I am going to blend this. So just blend with any sponge. और blend ਵਿੱਚ please ज़्यादा अपनी कोशिश होनी चाहिए कि ਆਪਾਂ डैब करिए. Don't rub it क्योंकि जे ਤੁਸੀਂ rub करोगे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ Okay, so ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ. then just go around your face and then use the ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ just go around. That's it. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਪ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗੇ. और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि सिर्फ कंसीलर लगा के तुसी अलग अलग उन्होंने शो करोगे बट नो अगर तुसी मतलब उन्होंने एक बार उस जगह ते उस स्पॉट्स से डैब करन तो बाद उन्होंने प्रॉपर एब्जॉर्ब हो गया. उस तो बाद तुसी जे तुसी डैब करोगे सारे फेस से विद योर स्पॉन्ज
it will start looking, you know, it will start giving the same tone for the whole face. And that's what I think you can see on my जो beauty vloggers ने, of course जो professionals ने, they would hate this. Trust me, they would hate this. But ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ Paris Fashion Week 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, right? So we are doing this for our daily life, daily routine, and obviously most of us avoid makeup because we want to have healthy skin. So that was my first step. Of course, now because I'm using very limited products, so I am not going to use powder, you know, the setting powder. So I'm gonna skip that. Then the next step would be, which I can never miss. Next step होना चाहिए bronze, and for that of course I'm going to use bronzer. So bronzer is my second product. Oh my god, मेरा bronzer break हो गया, मैंने लगता है कि गिर गया. Anyways, So bronzer ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ. ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕਿ obviously ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ, and to give two tones to your face. ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ. ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਡ ਸ਼ੇਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So I am going to take this one a good amount because bronzing is very important. So just makeup tissue paste. Okay. And I love Marc Jacobs bronzer. This is so freaking good. I have taken a lot. You don't need that much. Okay, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ले लिया सीगा. मैंने Okay, so that's how you need to bronze. So basically over here, depending on your bronzer, because I have two bronzers, I use two bronzers, another one is Too Faced, and that one you literally have to pick up a lot, and that's what I thought. I'm using that one, and that's why I picked up a lot. But for Marc Jacobs you just need a little bit, and just apply on your forehead, your cheeks, and then over here on your jawline, and little bit towards the nose. But now you can see two colors. It's not plain white, so it has two colors. Anyways, this is just the second product which I have used. Now because I am not going to do eyebrows, just you can skip that if you have all good eyebrows and you know you don't need it, or like eyebrows karaiya hoiyan ne, so just skip it. Okay, so now the third one would be blushes. Okay, so the best thing about this one is blushes and bronzer कि ये बहुत ही ज़्यादा एक mentality create की हुई है just consumerism ਲਈ कि अलग-अलग प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, but ਤੁਸੀਂ मतलब कि same प्रोडक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ bronze ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Same thing is with the blushes as well. You can use blush for your cheeks and you can use for eyeshadows as well. So I have this one, this blushes palette, and my gift from my dearest sister-in-law. So you can see that I have used this one a lot. This one is from Maybelline Master Blush series or whatever, like they have us time te aayi si, and then I have this one. So you can see I have used this one a lot, and that's what I'm going to do is with the any of the brush, just take it and apply on your cheek. That's it. और ये वाला जो है तुसी इनू हाईलाइटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो. That's why जे तुसी मतलब blush लेना वा तो please always buy palette, क्योंकि जो थोड़े कोल palette होगी blushes दी, फिर की हुंदा वा कि अपने को choices ज़्यादा होंदियां ने और ਤੁਹਾਨੂੰ अलग तो हाई
ਆਪਣੇ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਰੀ ਕਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। That's it. And you can see my face. It's pretty simple, right? I hope it's simple for you. So this was my third product, I think, and because I'm wearing this, so I should not go with pink or something. I should go with just my bronzer. So I'm just going to take just little bit, okay, and apply on this. eyelids. Okay, so that's all I'm gonna do. I'm sorry, my camera is my mirror. I'm looking at it like that. Okay, Yeah, see, this one is almost done. And now my fourth product will be mascara, of course, क्योंकि ਆਪਾਂ अगर मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हाँ या फिर आप इन्ना ज़्यादा नहीं करना, so I am going to skip eyeliner and I'm going to go with mascara because I cannot skip mascara. Huh? anyways, I'm skipping color. Okay, I need my other mirror for that. On and on with mascara. You know what? This is the best thing. I love mascaras. Look at that. Yeah, mascara is done. Now, this was my fourth product, remember, only fourth, okay? So now what I'm gonna do is I have a little bit over here, so just go. You don't need any product for that, just keep doing that windshield motion kind of brush, and I'm gonna take little bit from this one again and then apply under my eyes. Okay, little bit. And use your fingers as well. ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਸਕਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ. Okay, I need to stop. Okay, that's it. So that's it for mascara. This was my fourth product, and now the last one. Obviously you can apply any Vaseline, which I do most of the time. Most of the time I just use Vaseline. Otherwise you can take any kind of gloss. So because I wanted to finish everything including eyes and face and lips too, so that's why दिल ते पत्थर रख के मैं अपनी eyebrows ਨੂੰ miss ਕੀਤਾ क्योंकि मैं कदे भी नहीं I skipped eyebrow part, but I am definitely gonna use now my gloss, my tiny gloss. So this one was free from Sephora, and then I am just going to apply kind of Vaseline only, nothing fancy, just plain gloss. Okay, so that's it.
hair, you can do whatever. My hair are a little bit wet. Leave it like that, and I just apply a little bit clip at the back. That's it. So this is my makeup look, basic makeup look with only 5 products. Okay, I have used only 5 products to create this one. There's nothing fancy, I swear. Everybody can do it. Every single person in this world, in this entire universe can do this. There's nothing fancy about it, and you don't need tons and tons of makeup to do it. ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, eyebrows, eyeshadows, bronzer, blushes, foundation, concealer. The list will be so long and will be never ending, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ. So for now, I would say you just need 5 products. 5. Only 5 products for your daily life and for you to create this normal basic look. That's all you need. Only 5 products, I swear. I hope you guys have liked this video. That's all for now. And if you have liked it, and if you think that I have helped you guys, especially jo apni normal mass population who are not going to sit there for hours and hours and create those fancy looks. This is only for the basic normal people, normal look जो कि ਆਪਾਂ routine ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So if you have liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Thank you and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.